प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि सब ठीक ही होंगे। प्रिय मित्रों, आज का विषय थोड़ा संवेदनशील है और बहुत ज्ञानवर्धक भी। यदि आप शरीर में कमजोरी, स्वप्न दोष, पेशाब करने में दर्द, शीघ्र पतन आदि समस्याओं से पीड़ित हैं, तो ये 10 एक्सरसाइज आपको स्थायी समाधान दे सकते हैं। If you are suffering from problems like body weakness, nocturnal emission, pain during urination, premature ejaculation, then these 10 exercises can give you a permanent solution. चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। मैं भी ये व्यायाम नियमित रूप से करता हूँ। Exercise number 1. Incline push-up. Keep your hands elevated on a chair or bench. Then push your body up down using your arm strength. Remember to keep your body straight. नियमित पुश-अप स्थिति से शुरुआत करें, लेकिन अपने हाथों को कुर्सी या बेंच पर ऊपर उठाकर। फिर अपनी बांह की ताकत का उपयोग करके अपने शरीर को ऊपर नीचे धकेलें। Exercise number 2. Wide arm push-up. Start in the regular push-up position but with your hands spread wider than your shoulders, then push your body up and down. Remember to keep your body straight. नियमित पुश-अप स्थिति से शुरुआत करें, लेकिन अपने हाथों को अपने कंधों से अधिक फैलाकर रखें। फिर अपने शरीर को ऊपर और नीचे धकेलें। अपने शरीर को सीधा रखना याद रखें। Exercise number 3. Leg raises. Lie down on your back and put your hands beneath your hips for support. Then lift your legs up until they form a right angle with the floor. Slowly bring your legs back down and repeat the exercise. अपनी पीठ के बल लेट जाएं और सहारे के लिए अपने हाथों को अपने कूल्हों के नीचे रखें। फिर अपने पैरों को तब तक ऊपर उठाएं जब तक वे फर्श से समकोण न बना लें। धीरे धीरे अपने पैरों को वापस नीचे लाएं और व्यायाम दोहराएं। Exercise number 4. Diamond push-ups. Start in the push-up position. Make a diamond shape with your forefingers and thumbs together under your chest, then push your body up and down. Remember to keep your body straight. Push-up स्थिति से शुरुआत करें। अपनी छाती के नीचे अपनी तर्जनी और अंगूठे को मिलाकर एक हीरे की आकृति बनाएं। फिर अपने शरीर को ऊपर और नीचे धकेलें। अपने शरीर को सीधा रखना याद रखें। Exercise number 5. Slowly bend your elbows and press your upper body towards the wall. Push back and repeat the exercise. Remember to keep your body straight. धीरे धीरे अपनी कोहनियों को मोड़ें और अपने ऊपरी शरीर को दीवार की ओर दबाएं। पीछे धकेलें और व्यायाम दोहराएं। अपने शरीर को सीधा रखना याद रखें। Exercises number 6. Floor tricep grip. Lift your hips off the floor. Then bend and extend your elbows to lower and lift your hips. Repeat the exercise to strengthen your upper arms. अपने कूल्हों को फर्श से ऊपर उठाएं। फिर झुकें और अपनी कोहनियों को फैलाकर अपने कूल्हों को नीचे और ऊपर उठाएं। अपनी ऊपरी भुजाओं को मजबूत करने के लिए व्यायाम दोहराएं। Exercises number 7. The Hindu push-ups. Start with your hands and feet touching the floor, body bent and butt up in an upside down V shape. Then bend your elbows to bring your body towards the floor. When your body is close to the floor, raise your upper body up as far as possible. Then return to the original position and repeat.
Exercises number 8. Elevate your feet on a chair or bench and push your body up and down mainly using your arm strength. अपने पैरों को एक कुर्सी या बेंच पर उठाएं और मुख्य रूप से अपनी बाह की ताकत का उपयोग करके अपने शरीर को ऊपर और नीचे धकेलें. Exercises number 9. Swimmer and Superman. Lie on your stomach with your arms extended straight overhead. Alternately lift your opposite arm and leg. अपने पेट के बल लेटें और अपनी बाहों को ऊपर की ओर सीधा फैलाएं. बारी बारी से अपने विपरीत हाथ और पैर को उठाएं. The last one, number 10. Reverse snow angels. Lie on your stomach with your arms at your sides. Lift your arms up and extend them over your head to touch your thumbs. Then slowly bring them back. अपनी भुजाओं को बगल में रखते हुए अपने पेट के बल लेटें. अपनी भुजाओं को ऊपर उठाएं और अपने अंगूठे को छूने के लिए उन्हें अपने सिर के ऊपर फैलाएं. फिर धीरे धीरे उन्हें वापस ले आएं. Dear friends, students and parents as well, these exercises will boost your energy. Help others by sharing the video. It's more than medicine. I am a regular doer of these exercises. Thank you. Please subscribe and share.